I think in our last lecture we had also started with the application of Bernoulli's theorem, and we had seen what is Venturi meter. So basically, Venturi meter, it is nothing but it is a section of pipe of continuously changing cross section area. Okay, and it is basically a device which is used for measurement of flow. Okay, आपका कितना flow rate है, you can directly measure using Venturi meter. So Venturi meter basically consists of 5 sections. First section is inlet section. Okay, 1 minute. First section is inlet section. So in the inlet section, you can see there is a constant diameter pipe section. Its diameter is equal to whatever the diameter of pipe where venturometer is to be connected. Okay, and here one pressure tapping is provided in the inlet section. So this is inlet section. Then next is converging section or converging part. Okay, so this converging part or converging section basically consists of a pipe of reducing cross section area. Okay, and here the pressure decreases as the area reduces, pressure decreases, and velocity of flow increases. Okay, that means kinetic energy is pressure energy is converted to kinetic energy in converging section. Then in the throat section, basically it is again a section of constant diameter. Okay, and its diameter is minimum. Okay, then here again one pressure tapping is provided where you can connect the manometer. Okay, after that next part is uh, the diverging part. So in the diverging section, the cross section area continuously increases. Okay, and here the pressure again increases and velocity decreases. As area increases, so pressure increases, velocity decreases. Okay, and outlet section, this outlet section is just a section of pipe of diameter equal to outlet diameter. Okay, whatever the pipe of which is on the downstream side, its diameter equals to whatever the diameter of outlet section. Okay, so this is the construction of Venturi meter, and this Venturi meter basically gives us the whatever the flow rate, and we had derived the formula that Q equals to A1 A2 root 2G under root of CD. Q actually CD A1 A2 root 2G upon under root of A1 square minus A2 square into root H. Okay, so this formula we had already derived in our last lectures. Okay, here this CD is called as coefficient of Venturi meter. Okay, so this CD is nothing but it is simply defined as the ratio of actual discharge to theoretical discharge. Okay, this CD, this is nothing but it is a ratio of actual discharge or actual flow rate through the pipe divided by theoretical flow rate. Now this theoretical flow rate can be calculated by using this formula. Okay, A1 A2 upon under root of A1 square minus A2 square into under root of 2G. This is theoretical. तो आप theoretical को TD multiply करोगे तो आपको Q actual मिल जाएगा. Okay, and the value of coefficient of Venturi meter or coefficient of discharge for Venturi meter, its value is 0.98 to 0.99. Okay, so all this we had seen in our last lecture. Then I think we had also seen the value of H when we are using differential YouTube manometer. Okay, so see there are two cases of directly मैनोमीटर्स यूज कर सकते हो. ओके, यहाँ पे आपने मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, पीजोमीटर, यहाँ पे पीजोमीटर कनेक्ट कर दिया. ओके, सो दैट विल बी केस वन. केस वन में आप क्या करोगे, इन दोनों के हेड देखोगे और उनका डिफरेंस देखोगे. ओके, सो ये जो हेड रहेंगे ये आपको एक्चुअल प्रेशर देंगे, व्हाट इज एट ए एंड बी. अगेन instead of using piezometers you can use differential manometer. अभी differential manometer already हमने देखा है. Differential manometer will not give you what is the value of A, what is the pressure value of B, but it will give us pressure difference. आपको directly pressure difference measure करना है, so you can directly use differential YouTube manometer. Okay, so consider a differential manometer as shown in the figure. Okay, and it is using a heavier fluid. Okay, for example mercury as shown in the figure. Okay, then let SH, it is a whatever the specific gravity of heavier fluid, suppose mercury, SO is the specific gravity of fluid which is flowing through pipe, for example water. Okay,
ओके। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है जो आप मेजर करोगे, ओके, लेट दिस डिफरेंस इज x, ओके, हियर डायग्राम में लिखा है, लेकिन लेट दिस डिफरेंस इज x, ओके। देन वी नो द फॉर्मूला, जब आप डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हो हेवियर फ्लूइड के लिए, सो आपको जो x है, सपोज मर्क्यूरी है, तो x विल बी इन mm ऑफ मर्क्यूरी, तो इसको आपको मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर ऑफ मर्क्यूरी को मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा है, whenever differential manometer is used and heavier fluid is used, so formula is H equals to x S of H upon S of lighter fluid minus 1, okay, और सिंपली S mercury upon S water minus 1, okay। और यहाँ पे सपोज आपने लाइटर फ्लूइड यूज किया होता, सपोज यहाँ पे ऑयल यूज किया होता और वाटर फ्लो हो रहा था, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, H equals to x into 1 minus S of oil, sorry S of water, sorry S of oil upon S of water, okay। So 1 minus S lighter fluid upon S given fluid, okay। So I think ये already हमने discuss भी किया था during the practical of pressure measurement, okay। After that, next case is incline tube Venturi head, okay। Suppose आप incline tube manometer use कर रहे हो, okay। So incline tube manometer में you are using differential U-tube manometer, so you will directly get the value of x, okay। But यहाँ पे डेटम हेड उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। जब आप हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर यूज कर देते हैं, ओके, व्हेन यू आर यूजिंग द हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, जब आपने बर्नौलीज थ्योरम लगाया था तो उस टाइम पे Z1 और Z2, ओके, Z1 वाज इक्वल टू Z2, तो बर्नौलीज थ्योरम में Z1 Z2 कैंसिल हो गया था, ओके। 1 minute, I think some students are on waiting, okay। So in that case, Z1 and Z2 cancelled each other. But here in this case, as it is an inclined tube, so Z1 will be different, okay, and Z2 will be different. तो आप Z1 Z2 को cancel नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आपका जो वेंचुरी हेड है, okay, उसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। So वेंचुरी हेड is nothing but difference of manometric head, okay। So manometric head is nothing but Z1 plus P1 by rho g, okay। This will be manometric head at section 1, and manometric head at section 2 will be P2 by rho g plus Z2. So P1 by rho g plus Z1 minus of P2 by rho g plus Z2, okay। So that equals to x into whatever S of mercury upon S of water minus 1, okay। Similarly, for inclined tube manometer in which differential manometer contains lighter fluid, okay, so यहाँ पे आपका फॉर्मूला रहेगा H equals to और वेंचुरी हेड H equals to P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, this equals to x into 1 minus specific gravity of lighter fluid upon specific gravity of given fluid, okay। so ये चार फॉर्मूले आपको याद रखना है, okay। जब आप डिफरेंशियल यूनिट मैनोमीटर यूज कर रहे हो, okay, when you are using heavier fluid, so formula is H equals to given x into S of H upon S of given fluid minus 1. When you are using lighter fluid, H equals to x into 1 minus S of lighter fluid upon S of given fluid. When you are using inclined tube, so formula right side का same रहता है, left side में से वेंचुरी हेड जो हो जाता है, that is P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, okay। Similarly, formula for lighter fluid, okay। So we will see one numerical, everyone write down, a horizontal venturi meter, a horizontal venturi meter, a horizontal venturi meter with inlet and throat diameters, a horizontal venturi meter with inlet and throat diameters 30 centimeter and 15 centimeter respectively, a horizontal venturi meter with inlet and throat diameters 30 centimeter and 15 centimeter respectively
is used to measure the flow of water. Is used to measure the flow of water. The readings of differential manometer, connected to the inlet, connected to the inlet and the throat, connected to the inlet and the throat is 20 centimeter of mercury. Is 2020 centimeter of mercury. Determine the rate of flow. Determine the rate of flow. Take CD equals to 0.98. Take CD equals to 0.98. Okay, so what is given? See, first of all, you are supposed to focus on the condition. Which type of manometer? It is a horizontal manometer. Okay, so remember, यहाँ पे horizontal manometer दिया है. Okay, after that the inlet and throat diameters. Okay, so this will be, you can say, inlet diameter D1, and we will say this is throat diameter D2. Okay, these are 15 centimeter and 30 centimeter. That means 0.3 meter and 0.15 meter. Okay, is used to measure the rate of flow of water. The reading of differential manometer connected at inlet and throat is 20 centimeter of mercury. Remember, this 20 centimeter of mercury, it is a value of x. Okay, ये आपको x का वैल्यू दिया है. Why it is x? Because इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ओके, एंड रिमेंबर हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, तो आपको वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Then determine the rate of flow discharge. Take CD equals to 0.98. So first of all, D1 and D2 were given, so you can find out A1 and A2. So A1 is pi by 4 D1 square. Okay, so यहाँ पे सेंटीमीटर में निकाला है, और आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. देन A2 भी सेंटीमीटर में निकाला, आप इसको मीटर में ले सकते थे. ओके, आफ्टर दैट आपको डिफरेंशियल हेड भी दिया है. ओके, whatever the differential head is x, so 20 centimeter of mercury. So we know the formula is x equals to x into s of mercury upon s of water minus 1. Okay, so it is 20 into 13.6 upon 1 minus 1. So it is 20 into 12.6. Okay, so it is 252 centimeter of water. Okay, so easily you can calculate this. Remember here the specific gravity of mercury. Okay, so specific gravity of mercury is 13.6, और यहाँ पे हमें फ्लूइड कौन सा वाटर बोला है. ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर वाज 1. यहाँ पे हमने 1 और 13.6 लिया है. यहाँ पे सपोज आपको कोई और फ्लूइड बोला होता, सपोज ऑयल इज फ्लोइंग एंड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया होता, तो आप यहाँ पे 0.8 ले सकते. ओके, okay, after that we know the discharge through the Venturi meter is given by equation Q equals to CD A1 A2 upon root of A1 square minus A2 square into root 2 GH. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 0.98. कभी आपको प्रॉब्लम में नहीं दिया होता तो आप डायरेक्टली 1 अज्यूम कर सकते थे. ओके, प्रॉब्लम में दिया है, so we will take 0.98 into A1. A1 is 706.85 centimeter square. A2 is 176.7 centimeter square. Okay, divided by A1 square minus A2 square. So under root of 706.85 square minus 176.7 square. Okay, into under root of 2G into H. H is Venturi head. So it is under root of 2 into 9.81 into 252. Okay, so you can solve this on calci. Okay, so it basically comes out to be 125,756. Okay, so that is यहाँ पे हमने सारे वैल्यू सेंटीमीटर में लिए है, so it is centimeter square per second. Remember 1 centimeter. Okay, remember the convergence. 1 meter cube is 10 to the power 6 centimeter cube. Okay, 1 meter is 100 centimeter, so 100 into 100 into 100, so 10 to the power 6. Then 1 meter cube is equal to 1000 liters.
ओके, या फिर 1 liter is 10⁻³ मीटर क्यूब. Then 1 centimeter cube, okay, is equal to 10⁻³ liters. या फिर आप 1 ml बोल सकते हो. 1 ml equals to नहीं sorry. Okay, so you can say 1 liter is 1000, sorry, 1 centimeter cube equals to 10⁻³ liters. So 1 liter is 1000 centimeter cube. Okay, so remember this conversions. 1 liter is 1000 centimeter cube. So basically 1 centimeter cube क्या होगा? 1 centimeter cube per second, it will be 10⁻³ liters per second. So divided by 1000. Okay, so it is 125.756 liters per second. So ये 4 conversion आपको एकदम याद रहने चाहिए while solving the problem. Okay, या फिर मीटर क्यूब में करते तो सिंपल था. यहाँ पे आंसर जो आता था आंसर आता था 0.125756 और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे तो 125.756 लीटर पर सेकेंड आता था. Is this clear? Next numerical. Horizontal Venturi meter with inlet diameters. A horizontal Venturi meter with inlet diameters 20 centimeter with inlet diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. Inlet diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter is used to measure the flow of oil. Is used to measure the flow of oil of specific gravity 0.8. Is used to measure the flow of oil of specific gravity 0.8. The discharge of the oil through Venturi meter is 60 liters per second. The discharge of the oil through Venturi meter is 60 liters per second. Find the reading of the oil. Find the reading of the oil mercury differential manometer. Find the reading of oil mercury differential manometer. Take CD equals to 0.98. Take CD is equal to 0.98. Take CD equals to 0.98. Okay, so what is given? Again, this is a problem of horizontal Venturi meter. See, एग्जाम में भी आज तक कभी इंक्लाइन वेंचुरी मीटर के प्रॉब्लम पूछे नहीं है. ओके, सो मोस्टली जो प्रॉब्लम आएंगे वो हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर के होंगे. So with inlet diameter, so D1 is given 20 centimeter and throat diameter D2 is given, so that is 10 centimeter. Is used to measure the flow of oil. So remember here, water is not the fluid. The fluid is a oil of specific gravity 0.8. So SO. Okay, so this is 0.8. Then discharge to the Venturi meter. यहाँ पे आपको डायरेक्टली Q actual दिया है. Okay, यहाँ पे CD दिया है तो बेसिकली Q actual है. So Q actual is 60 liters per second. That means 60 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड. या फिर आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करना है तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So it is 60,000 centimeter cube per second. Find the reading of the oil mercury differential manometer. Okay, मतलब आपको H निकालना है और H निकालने के बाद आपको X निकालना है. ओके, बिकॉज वहां पे आप जो भी फ्लूइड यूज करोगे वो आपको X का वैल्यू देंगे. ओके, so we'll see the problem. So D1 is 20 centimeter. So A1 was pi by 4, 20 square. Okay, again calculation centimeter में की है. So 314.16 centimeter square. Then D2 is 10 centimeter. So A2 is pi by 4 10 square. So it is 78.54 centimeter square.
ओके, अभी यहाँ पे आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो आपको डिस्चार्ज भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज 60 into 1000, so it is 60,000 meter cube per second, and CD is 0.98. Okay, now using the equation, see इसके प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं. सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. ओके, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए. So for Venturi meter, we know the discharge is Q equals to CD A1 A2 upon under root of A1 square minus A2 square and to under root of 2GH. Okay, so put all the values. So this is 60 into 10 power 3. So 60 into 1000 Q. So that equals to CD. CD is, okay, यहाँ पे गलत हो गया है. Okay, यहाँ पे do the correction. It is here 0.98. It is not 9.81. It is 0.98. Okay, so CD 0.98 into A1 A2. So A1 is 314.16 into 78.54 divided by root of A1 square minus A2 square. So root of 314.16 square minus 78.54 square into under root of 2GH. So under root of 2. Okay, remember this. यहाँ पे आप कैलकुलेशन का में कर रहे हो सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे G का वैल्यू कितना होता है? G का वैल्यू होता है 9.81 और यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो इसको आपको यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा. तो मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन करोगे, सो इट विल बी 9.81 into 100. ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 981. ओके, तो रिमेंबर आप सारे कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहे हो तो आपको जी का वैल्यू 981 लेना है, या फिर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सारे वैल्यूज मीटर में कन्वर्ट करो तो आपका यहाँ पे जी का वैल्यू 9.81 रहेगा. ओके, कभी आप सारे वैल्यू सेंटीमीटर में लेते हो और यहाँ पे जी का वैल्यू 9.81 लेते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, बिकॉज आपने सारे वैल्यू सेंटीमीटर में लिए है और जी का वैल्यू मीटर में लिया है. रिमेंबर दिस. ओके, so on solving this, finally you will get the value of h. Root h is 17.029. So squaring that, so you will get the value of h as 289.98 centimeter of oil. Okay, so in this way you can solve the problem. So problem एकदम simple था, जब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. Okay, now ये जो h मिला है that will be, okay, यहाँ पे again यूनिट गलत हो गया है. okay, this is सेंटीमीटर ऑफ वाटर. सेंटीमीटर ऑफ वाटर यहाँ पे वाटर में मिलेगा आपको. ओके, बट आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपको हेवियर फ्लूइड, दैट मीन्स मर्क्यूरी के फॉर्म में मिलेगा. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला h equals to x into x into specific gravity of mercury upon a specific gravity of given fluid. So given fluid is oil minus 1. तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू. So it is 289. Okay, so 89.98 that equals to x into 13.6 upon 0.8 minus 1. So solve this. So it will become 16x. So 16 को आपको डिवाइड करना है. So you will get 18.12 centimeter. ओके, इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम. जब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और सारे वैल्यूज पुट करना है. ओके, सो प्रॉब्लम ऑन वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, दे आर वेरी सिंपल टू सॉल्व. जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है. ओके, we will see one more problem. Then from next lecture we will try to start orifice meter. Okay, so find the discharge of water flowing through a pipe 30 centimeter diameter placed in an inclined position where a Venturi meter is inserted. Okay, so this will be the problem of inclined Venturi meter. Okay, then having a throat diameter 15 centimeter. So basically आपको diameter of pipe, that means D1 दिया है. D1 is 30 centimeter and
throat diameter d2 is 15 centimeter, and the Venturi meter is in inclined position. Then the difference of pressure between the main and throat is measured by a liquid of specific gravity 0.6. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो फ्लूइड यूज किया है, ओके, मेजरमेंट के लिए, वो फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.6 और हमारा गिवन फ्लूइड वाटर है. तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजरिंग फ्लूइड it is less than the specific gravity of water. So basically यहाँ पे हम कौन सा ट्यूब यूज करेंगे, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हैं और रीडिंग कितना है 30 सेंटीमीटर 30. देन द लॉस ऑफ हेड between the main and throat is 0.2 times the kinetic energy of the pipe. ओके, यहाँ पे आपको जो भी लॉस है, ओके, सो लॉस कितना है 20% और 0.2 times the kinetic energy. So kinetic energy is v square upon 2g. Kinetic head बोला है ना, so it is v square upon 2g. Okay, so we are supposed to solve this and find out the discharge. Okay, so first of all d1 is given to us, so d1 is 30 centimeter, so a1 is pi by 4 30 square. Okay, again centimeter में calculation कर रहे हैं, so it is 706.85 centimeter square. Then d2 is 15 centimeter, so again a2 is pi by 4 15 square, so it is 176.7. Okay, now this is the given case. The Venturi meter is in inclined position and x is 30 centimeter. Okay, now we know it is for the inclined tube manometer, the difference of pressure head H is given by P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, that equals to given Venturi head H. Okay, यहाँ पे H क्या रहेगा, H will be कभी हेवियर फ्लूइड रहता था तो x इंटू 1 s ऑफ हेवियर फ्लूइड अपॉन s ऑफ गिवन फ्लूइड -1 रहता था, बट यहाँ पे लाइटर फ्लूइड है, सो इट इज h इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस s ऑफ लाइटर फ्लूइड अपॉन s ऑफ गिवन फ्लूइड. ओके, सो इट इज 1 माइनस 0.6 अपॉन 1. ओके, एंड x का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है 30 सेंटीमीटर. ओके, सो इट इज 30 into 1 minus 0.6 upon 1, so 30 into 0.4, that is 12 centimeter. Okay, so h equals to 12 centimeter of water. So ये h का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं. Okay, after that, yeah, also loss of head is given. So loss of head is 0.2 into kinetic head of pipe. So 0.2 into पाइप बोला है. ओके, सो पाइप का वेलोसिटी लेना है v1 square by 2g. ओके, so now we will apply the Bernoulli's theorem between 1 and 2. So we know p1 by rho g plus z1 plus v1 square by 2g, that equals to p2 by rho g plus z2 plus v2 square by 2g plus losses. Okay, so यहाँ पे we will do one thing, we will transfer this p2 by rho g plus z2 on left side. Okay, so left side में टर्म क्या हो जाएगा, p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2, और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है. ओके, p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2, that is h 12 सेंटीमीटर. वहाँ पे आप डायरेक्टली 12 पुट कर सकते हो. ओके, सो ऑन ट्रांसफरिंग वी विल हैव p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2 plus v1 square by 2g minus v2 square by 2g, that equals to hl. Okay, अभी hl का भी वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज 0.2 टाइम्स v1 square by 2g. एंड यहाँ पे हमें पता है ये जो टर्म है p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2, इसका वैल्यू है 12. Okay, so we will put all the values, so this term will become 12. So 12 plus v1 square by 2g minus v2 square by 2g, that equals to 0.2 v1 square by 2g. ओके, अभी ये 0.2 v1 square by 2g को हम राइट साइड में ले जाएंगे. ओके, तो वी विल हैव, ओके, या फिर ओके, इसको हम राइट में ले जाएंगे, सो इट विल बिकम 1 minus 0.2, so we will have 12
plus 0.8 v1 square by 2g minus v2 square by 2g, that equals to 0. You can call this some equation A. Okay. Now we will apply the continuity equation between section 1 and 2. So we know by continuity equation, whatever the discharge or flow rate at section 1, that equals to flow rate at section 2. So Q1 equals to Q2 और A1 V1 equals to A2 V2. ओके अभी A1 का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है. ओके A2 का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है बिकॉज D1 D2 पता था. ओके so here we can say V1 equals to A2 by A1 into V2. So it is pi by 4 15 square upon pi by 4 30 square into V2. अभी pi by 4 कैंसिल होगा. 15 और 30 means 15 1 जा 15 2 जा again 15 1 जा 15 2 जा. So basically ऊपर 1 into 1 नीचे 2 into 2 आएगा. So 2 into 2 is 4. So V2 equals V2 by 4. Okay. So V1 is simply V2 by 4. So V1 का value in terms of V2 हमें पता है. So we will put here. Okay. In equation A. So that will be 12 plus 0.8 by 2g into V1 square. V1 square is nothing but V2 by 4 whole bracket square. Okay. Minus V2 square by 2g, that equals to 0. So finally we will have 12 plus V2 square by 2g. Okay, इतना कॉमन लिया तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 0.8 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16. तो 0.8 डिवाइडेड बाय 16 माइनस लेफ्ट साइड में 1 बचा सो -1. So solve this. Okay, so it will finally we will have V2 square by 2g in bracket 0.05 minus 1. So that equals to -12. ये 12 राइट साइड में चले जाएगा. ओके सो बेसिकली ये 0.95 आएगा. -0.95 माइनस माइनस साइन कैंसिल होगा. So finally we will have 0.95 V2 square upon 2g, that equals to 12. Okay, अब यहाँ पे g का वैल्यू आप 981 लोगे बिकॉज ऊपर आपने सारे सेंटीमीटर में. आप इवन यहाँ पे 9.81 लिया तो भी चलेगा. उस केस में V2 का वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगा. ओके बट आपने ऊपर सारे वैल्यूज जो है वो सेंटीमीटर में लिए थे. सो बेसिकली आप यहाँ पे 981 लो. ओके so you can multiply this 2g and divide by 0.95 and then take square root. Finally you will have V2 equals to under root of 2 into 981 into 12 divided by 0.95. इसका स्क्वायर रूट लेना है. It comes out to be 157.4 centimeter per second. Okay, so once V2 is known to you, so we know discharge is nothing but A2 into V2. So it is 176.7. Okay, multiplied by 157.4 area into velocity. So it is 27800 centimeter cube per second. Remember centimeter cube per second का मीटर क्यूब लीटर पर सेकंड में करना है तो डिवाइड बाय 1000. Okay, so it is 27.8 liters per second. Okay, so today we'll stop here. So today we had seen the numericals on Venturi meter. Okay, after that next is orifice meter. So orifice meter क्या होता है? Okay, then one numericals on orifice meter, then pitot tube numericals on it. Okay, and Coriolis flow meter. So all this we will try to cover in next lecture.